student. I am your science subject teacher Rosana. Today I will teach you the unit 2 microorganisms, the page number 18. This chapter is included in your month of August. What is microorganisms? Organism that is so small that it can only be seen through a microscope is called microorganism or microbe. The study of microorganism is known as microbiology. Scientists who study microorganism are known as microbiology. The types of microorganism, there are 5 major groups of microorganism: viruses, bacteria, algae, fungi and protozoa. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद ही हुई है। तो आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल in these microorganisms. The first organism is virus. Viruses are smaller than any known cells. The size and structure. This virus are very small and we can it cannot be seen by a light microscope. To observe viruses, scientists use an electron microscope which magnified an object to more than 20 millions. The structure of virus virus do not have a cellular structure that like other organism. A virus consists of a single strand of nuclear matter, DNA or RNA, surrounded by a protein coat outside the cell host. They remain inactive. They cannot be cultured outside the specific host cells. Shapes of viruses are virus show a widely variety of shapes and structure. They can be rod-like, spherical or many-sided or tetrahedral. Viruses cannot reproduce by themselves. When a virus enters the living cell, an organism, say a human, it is able to reproduce. It uses the energy of the host cell for the purpose. After the formation of thousands of viruses, the host cell often dies. It bursts and the new viruses spread and invade other cells. As a large number of host cells die, the person falls ill. वो वायरसेस जो हैं वो हार्मफुल होते हैं और इन पर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता। मैनी डिजीज आर कॉज बाय द वायरसेस. हार्मफुल वायरस. डिफरेंट वायरसेस अटैक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चिकन पॉक्स एंड मीजल्स वायरसेस अटैक द सेल्स ऑफ द स्किन एंड कॉज रेड रैशेस. The common cold virus attack the cell that in the nose and throat, causing stiffness and sneezing. The rabies virus attack the nerve cells in the brain. चिकन पॉक्स और मिजल्स में जो है दाने दाने से बॉडी पर उभर आते हैं, रैशेज हो जाते हैं और उसमें जो है नाक बहना शुरू हो जाती है. कोल्ड जो कॉमन कोल्ड वायरस जो होता है जिसमें फ्लू है वो उसके अंदर नाक बहने लगती है और मतलब नाक बंद भी हो जाती है. और ये रेबीज डिजीज़ जिसे कॉमनली जो है कुत्ते के काटने से होती है और इसमें जो है जिसे हाइड्रोफोबिया भी डिजीज़ कहते हैं. और ये जो है हाइड्रोफोबिया डिजीज़ होती है जिसमें पानी से उसको खौफ आने लगता है और ये काफ़ी सीवियर होती है. सम वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट and other living organisms. They can be death or damage these organisms. Virus that invades bacteria in many sites and has a tail stalk, it is known as bacteriophage. This is the structure of bacteriophage which can attack the bacteria. Now the tobacco mosaic virus affect the tobacco plant. It's shaped like a rod. The foot and mouth diseases virus causes the foot and mouth diseases in cattle. Now the next I will explain about the bacteria. You can see the structure of bacteria. This is surrounded by a cell wall and a flagell to move. The nucleus, it has not proper nucleus.
only the nuclear matter is present in the cell, and cell have a cytoplasm and also in granules, no organelles like other cell structure. Bacteria is a unicellular structure. DNA or RNA is present in cytoplasm. The shapes, the size and structure, their size is varies from 0.2 to 100 micron, and 1 micron is 1 upon 1000 of millimeter. We can see bacteria with the light microscope and the shapes of bacteria. Bacteria are found in 3 different shapes. Rod shapes called bacilli, for example, lactobacillus, now bacillus and pseudomonas. Now number 2 is spherical called cocci, ये राउंड शेप में होते हैं. सार्सिना, माइक्रोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं इनमें सेल जो होते हैं चेन में होते हैं, और जो मोनोकोकस होता है इसमें सिर्फ एक ही जो होता है बैक्टीरिया सेल होता है. तीसरी जो टाइप्स है वो स्पाइरल कॉल्ड स्पाइरेला, फॉर एग्जाम्पल विब्रो, ट्रिप्सोनीमा एंड Campyllo overactor. This is that you can see this structure of spirilla. And growth. Bacteria reproduce by transverse binary fission. When conditions are favorable, a Fusobacteria cell divided into new equal size formed. These cells are called daughter cells, separate and divided after. You can see this इस डायग्राम. इसमें सेल जो है जो डिवाइड हो रहा है, पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल्स में, और फिर ये जो है इन डॉटर सेल में बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं अपने पेरेंट सेल के जरिए. सम बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशंस ऑफ बैक्टीरिया जो होती है, द सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया बिल्ड सीरिफिलेजा विच हेल्प देम टू मूव. सम ऑफ दिस बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड by the process similar to photosynthesis called autotroph. However, most bacteria cannot make their own food and they utilize the food synthesized by the other organisms and are called heterotrophs. कुछ सेल ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये ऑटोट्रॉफ. लेकिन मोस्टली जो होते हैं बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी जो पैरासाइटिक्स और सेप्रोफाइटिक्स होते हैं क्योंकि अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते, एंड दे मे बी दे गेट फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गन्स और फ्रॉम डिकेइंग मैटर. नाउ जो बैक्टीरिया मे बी यूजफुल और हार्मफुल. द useful bacteria helped by decomposing the tissues of dead organ to get the food. Without bacteria, piles of dead organism would cover the earth. The nutrients that were taken from the soil by plants and animals and restored and are used again by living organism. The next is useful is some bacteria live in the root nodules such as gram, pea, bean, etc. These bacteria absorb the nitrogen of the atmosphere and convert it into nitrates, which serve as a natural fertilizer of plants. Certain bacteria normally live in digestive system of some animals such as cow, goats and sheep. They help the animals to get grass and plants by breaking down in cellulose. With the animals themselves cannot do, bacteria help in use in make certain foods. Bacteria are used to make medicine called antibiotics. They are also used in making vitamin B complex tablet. The human hormones called insulin is obtained from the bacteria. Insulin obtained from the bacteria is used to help the patient, diabetic patients whose body produce little or no insulin. Bacteria are useful in tobacco, leather and jute industry also. Now harmful bacteria. Many bacteria cause diseases. Tuberculosis, tetanus, scarlet fever and whooping cough are some of the diseases caused by bacteria. To read and understand these topics which I have explained you, and if you have any confusion you may ask me on your WhatsApp group.